हरे कृष्णा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के इस स्पेशल शो में जिसका नाम है एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। इस शो की स्पेशलिटी है कि हम भगवान के बड़े ही सुंदर से भक्तों से आपको मिलवाते हैं। अनेकों श्रील प्रभुपाद के ऐसे ज्वेल्स रहे हैं जो कि अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं और हमें एक सीख देते हैं कि इस भौतिक संसार में आकर हमें अपने जीवन को भगवान को समर्पित करते हुए कैसे जीना चाहिए। आज दर्शकों एक बहुत ही शुभ दिवस है क्योंकि हमारे साथ आज एक ऐसे वैष्णव जुड़ रहे हैं जो पिछले 44 इयर्स से अपने जीवन में श्रील प्रभुपाद के एक बहुत ही सुंदर से सपने को प्रस्तुत करते हुए विश्व या फिर इंटरनेशनल लेवल पे साइंस को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर रहे हैं। और आज के हमारे गेस्ट का नाम है हिज ग्रेस रसराज प्रभु जी। इनका प्रोफेशनली नाम है प्रोफेसर रवि गोममत and he is a senior initiated Vaishnava monk in ISKCON from past 44 years. His Grace रसराज प्रभु जी ने ISKCON टेम्पल प्रेसिडेंट के तौर पे जुहू में सेवा की है इन अर्ली 90s और इसके साथ साथ उन्होंने ISKCON बर्कली में भी 11 साल तक सेवाएं की है। उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ISKCON के पोजीशंस को हेल्ड किया है और इम्पोर्टेंटली वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड भी है उनकी सेवाओं के लिए। आज के समय पे वे एक एक्टिव रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को एक मॉडर्न साइंटिफिक लैंग्वेज में प्रस्तुत कर रहे हैं जो श्री प्रभुपाद का सपना था। प्रभु जी एक ब्रह्मचारी है परंतु इसके पश्चात भी वे एक एक्टिव रिसर्च स्कॉलर है। 1990 जनवरी में उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था जो कि एक्चुअली फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था ऑन द टॉपिक कॉल्ड एज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस विद इन साइंस इन सैन फ्रांसिस्को। एंड हिज ग्रेस रसराज प्रभु के जो स्कॉलरली पेपर पब्लिकेशंस है उनको एक करिकुलम के तौर पे स्टडी किया जाता है इन नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जैसे कि ब्राउन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट। ये दुनिया के ऐसे बहुत ही विख्यात यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें एडमिशन इंटरनेशनली स्टूडेंट्स को मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है। आज के समय पे प्रभु जी डायरेक्टर है भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के जुहू में और बहुत ही सुंदर रूप से प्रभु जी ने कोलैबोरेट किया है भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट को बिट्स पिलानी के साथ में ताकि हम अध्ययन कर सके साइंटिफिकली कॉन्शियसनेस स्टडीज के बारे में। प्रभु जी ने एक इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ सिमेंटिक इंफॉर्मेशन साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इन अफिलिएशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ताकि बच्चों को मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम्स दिए जा सके इन फिलॉसफी ऑफ साइंस। He is also a scholar in ancient Indian Vedic thought and he specializes in Gaudiya Vaishnava Vedanta. दर्शकों, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इन महान भक्त के बारे में। हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है जिसके लिए उनकी तारीफ की जा सके कि वो कितने सुंदर रूप से श्री प्रभुपाद के सपने को साकार कर रहे हैं। इसीलिए आज की ये जो हमारी इंटरव्यू होगा ये बहुत ही डिफरेंट होगा क्योंकि अब तक हमने कभी भी हमारे शो में इतने साइंटिफिकली रिलीजन को कभी भी नहीं सुना होगा। इसीलिए आप लोग तैयार हो जाइए और जितने भी लोग कहते हैं भगवान नहीं है क्योंकि साइंस ही सब कुछ है उनको जल्दी से ये लिंक शेयर कर दीजिए क्योंकि आज प्रभु जी उन सभी को रिलीजन साइंस बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए दर्शकों अब आपके सामने हम वेलकम करते हैं हिज ग्रेस रसराज प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। We thank you very much on behalf of Hare Krishna TV for giving your precious time and being here present for our show today, Prabhuji.
Oh, thank you for inviting me and having me here. It's a pleasure to have you, Prabhu. And I feel today our country and our devotees will also be blessed. मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी हमारे दर्शक हैं जो आज शो को देखने वाले हैं, वे एक बहुत ही सुंदर से नजरिए से रिलीजन एंड साइंस की व्याख्या को आपके मुखारविंद से सुनेंगे. So, with your permission, Prabhuji, we would like to start the interview for today. Sure. Thank you, Prabhu. So, Prabhuji, we would first like to know how was your childhood. हम सबसे पहले आपका बाल्यपन कैसा था, आपके परिवार में क्या वातावरण था, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे. You can speak in your language of comfort. Well, ऐसे तो मैं मद्रास तमिलनाडु से आ रहा हूँ. वहाँ मेरा जन्म हुआ, चेन्नई सिटी में. और वहाँ हमारा फैमिली श्री वैष्णव पंथति में आ रहे हैं. सो चाइल्डहुड से हम हमारे घर पे विष्णु को पूजा होता था और सब कुछ. बट लेकिन we did not know any philosophy. I am now talking about 1950s, 55, 57, 58, like that. So I was 6-7 years old. And even at that time, अभी कितना 7 साल पहले भी लोग को मन में ऐसा आ गया कि पढ़ना है और नौकरी करने का है ऐसा. तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कलाचार और हमारा फिलॉसफी सब लोग तब समय में भी बोल रहे थे. So that is, it was going on, they were forgetting. So I also studied, but still we were pious and the family was pious. And then I went to study engineering. I did my bachelor's and master's. So that was my childhood. So, Prabhuji, how did you come to Krishna consciousness? Because today's time, wherein the youth is so deviated, उन्हें दुनिया की चीजें बड़ी अट्रैक्टिव लगती है. एंड हम यदि साइंस की भी बात करें तो साइंस को इन्होंने कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ डिफरेंट ही बना दिया है. और वो लोग सिर्फ एक ही पॉइंट सिंपल कहते हैं, वी बिलीव इन लॉजिक, science does not believe in God, and therefore we also do not believe in God. So, you being a youth and you are a scientist, Prabhu, in that days, how did you feel and accept Krishna consciousness? Well, मैं पहले इंजीनियर था. मैं बैचलर्स इन इंजीनियरिंग अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में मैं किया था. उसके बाद मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आई डिड इन बिट्स पिलानी. तो उसी समय जो आपके सबके पास छोटा लैपटॉप है, वो सब वगैरह उस समय नहीं था. Then there were only big computers, and even in India there were only 2 computers in the whole of India. One was in IIT Kanpur, the other was in BITS Pilani. So we had an IBM 1130, I think IIT Kanpur had IBM 1601. बस पूरा इंडिया में 2 ही कंप्यूटर था, छोटा कंप्यूटर. I mean, मतलब there were mainframes. Then I started working with Air India. I started उन लोगों का ऑनलाइन रिजर्वेशन, सब कंप्यूटराइज रिजर्वेशन वो सब शुरू हो रहा था उस समय. तो वो टीम में मैं ज्वाइन किया. तो बॉम्बे में नौकरी कर रहा था मैं एट दैट टाइम. एंड दैट टाइम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, दे गॉट 1 कंप्यूटर, डेक 10 करके, डेक कंप्यूटर. इंडिया में 3 कंप्यूटर. देन 2 साल के बाद IIT मद्रास में एक IBM 370 आया. So that was at that time the biggest computer. So I was working in computers. Then I somehow got an offer for a job in the States. And I went. In those days, not so many people were going with the job. पढ़ने के लिए लोग अमेरिका जा रहे थे, इंजीनियरिंग या मेडिसिन के लिए. So then I went to America. And I was working in Detroit.
So then there is, in this Hare Krishna Desiratory, I think there is a series called How I Joined Krishna Consciousness. So मेरा वीडियो भी है एक उसमें. And so मैं वो वीडियो में विस्तार रूप से मैं बोला हुआ है how did I join like that. But the main thing is that I was in Florida for one vacation, and one American brahmachari came and gave me a Back to Godhead. And मैं इतना भी विचार नहीं किया क्यों अंग्रेजी आदमी वो क्यों सैफरन में है, वो भी नहीं विचार किया नहीं, because we were always so secular, so we didn't even react to this dress. And so I took that. I didn't even read that magazine, but somehow then when I came back to Detroit, I went to the Detroit temple for a Sunday feast. There I got Srimad Bhagavatam, first canto by Srila Prabhupada. And as soon as I read it, I think maybe within 1 or 2 minutes I was convinced as I started reading the book. So then in about 6-7 months time, I joined full time. So I joined in Detroit, I joined here. Achha. And then how did you come to Mumbai, Juhu? Oh, so then I joined in Detroit temple. Then somehow Srila Prabhupada came to me, and then somehow he gave an indication that he wants me to work in the scientific wing. So I then closed. I had a company, and I'm a computer company in America. I may be one of the first Indians to start a computer company in America in those days. There was, of course, the TCS and all were there, but as an individual, एक कंप्यूटर कंपनी में शुरू किया था. So बस वो सब बंद करके सैन फ्रांसिस्को गया. So then I started working on this scientific wing, but even at that time मुझे नहीं लगा कि प्रभुपाद जी ने मैं विज्ञान में शोध करना चाहता है. I didn't expect that. I was thinking वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट को मैनेज करने के लिए प्रभुपाद जी ने मुझे बुलाया, ऐसा मैं सोचा. But later only I somehow, by Prabhupada's mercy, then I somehow started scientific research. Quantum mechanics was not my field. I was an electronics engineer. Of course, I had done some solid state device physics and all that. So then उसके बाद मैं PhD भी किया, तो जो भक्तिवेदांता इंस्टीट्यूट में. So जो भक्तिवेदांता इंस्टीट्यूट उस समय बॉम्बे में था ब्रांच. So मैं शुरू से I decided to come 6 months in India, 6 months in America. Okay. So then like that I came to Bombay, and I was trying to develop the institute in Bombay also, and I used to go to America for my research base. So I go half a year there, half a year like that. It has gone. That's beautiful, Prabhuji. दर्शकों, आज आपके समक्ष ऐसे व्यक्ति प्रस्तुत है जो कि आपको बहुत ही कुछ डिफरेंट बता रहे हैं और आगे बताने वाले. इसीलिए आप सभी से निवेदन है, कृपा करके जल्दी से इस लाइव शो का लिंक अपने जितने भी कॉन्टैक्ट से सबसे शेयर कीजिए, और सभी से निवेदन कीजिए कि वो तुरंत ही इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें, बिकॉज आज प्रभु जी बहुत ही गुह्यतम ज्ञान बता रहे हैं. दर्शकों, आप जानते हैं प्रभु जी ने अभी अभी हमें बताया कि he was one of the first individuals to own a company in the United States of America who was manufacturing or else into computers. प्रभु जी वो व्यक्ति है, एक भारतीय थे जो कि सबसे पहले व्यक्तियों में से जिन्होंने यूएसए में अपनी एक कंपनी स्टार्ट की थी कंप्यूटर्स में. तो ये ऑब्वियसली हम सभी नहीं जानते, और ऐसे कई सारे रहस्य अब प्रभु जी हमारे समक्ष खोलेंगे. इसीलिए आप सभी से निवेदन है, प्लीज जल्दी से इस लिंक को शेयर कर दीजिए. सो प्रभु जी, आपने ये जो बात बताई ये बहुत ही ब्यूटीफुल है कि आपने डेट्रॉइट से ज्वाइन किया था, एंड समहाउ आपने बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड किया. इट वाज श्रील प्रभुपाद्स इंस्ट्रक्शन और ड्रीम टू ब्रिंग यू क्लोज टू द साइंटिफिक रिसर्च. एंड एज आई कैन सी, आपका क्वांटम फिजिक्स में मतलब यू वर नॉट एन expert in it, or it's not your study or field of research, but then you over a period of time आपने उस पे work on करके research करना start किया. So how was this journey, Prabhuji? Like there was an individual,
जो कि एक एयरलाइंस के साथ काम कर रहे थे, देन यू वर इन डेट्रॉइट। एक भक्त बैक टू गॉडेड मैगजीन से आपने अपना जीवन श्रील प्रभुपाद को समर्पित कर दिया। बस भागवतम कर पढ़ के कुछ ही मिनटों में आपने समझ लिया कि ये, आप कन्विंस हो गए कि दिस इज व्हाट एक्चुअली फिलॉसफी इज। एंड आप 6 ही महीनों में अपने जीवन को फुल टाइम एक ब्रह्मचारी के रूप में श्री प्रभुपाद को समर्पित कर दिया था। सो ऐसी कौन सी बातें थी प्रभु जी जो एक साइंटिफिक पर्सन को टच कर गई थी अबाउट रिलीजन? उसी समय वो साइंस का इम्पोर्टेंस इतना नहीं था मेरा लाइफ में. I didn't care so much for science, although I was an engineer and I worked in. My company was not manufacturing computers, but I was doing system software, which is means writing operating systems, compilers and large database design, data communication, and all that stuff. We were doing at that time. So when I joined, I liked the Bhagavatam. I thought it was a very beautiful book. Of course, Srimad Bhagavatam, Srimad शब्द का अर्थ है सुंदर, beautiful. So Srimad Bhagavatam means beautiful Bhagavatam. So it's a very, very beautiful book. Nigama Kalpataror Galitam Phalam. It is considered the fruit of the Vedic tree of knowledge. So I was happy with just the movement and prasadam and chanting and dancing and philosophy, mainly Bhagavatam. Bhagavatam made me a devotee, the book, Srila Prabhupada's Bhagavatam book. But बाद में प्रभुपाद जी ने बोला ये मेरा सबसे बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है. एंड उस समय मुझे मालूम पड़ा कि ये कुछ इंस्टीट्यूट है और ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है. Like I said, I thought he wanted me to manage because in America I had managed, projects and all that stuff. But बाद में एक बार, so after I started working in Bhaktivedanta Institute, एक बार मैं पब्लिक लाइब्रेरी में गया था इंग्लिश एडिटिंग के लिए किताब लाने के लिए. So मैं जाने का उद्देश्य था कि इंग्लिश एडिटिंग बुक लाने के लिए. So क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में है ना हम लोग, तो अगर कुछ लिखेंगे तो उस समय इंग्लिश तो पक्का होना चाहिए. राइटिंग स्पीकिंग इंग्लिश तो अलग है और राइटिंग इंग्लिश इज डिफरेंट. राइटिंग इंग्लिश में एडिटिंग होता है. सो इसलिए क्या एडिटिंग कैसे करने का उस किताब ढूंढने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी में गया मैं. तो वहाँ I feel there is some network glitches. प्रभु जी will be there with us soon. So जैसे कि दर्शकों आप देख रहे हैं, प्रभु जी सबसे पहले जब जुड़े थे तो yes, प्रभु जी is there with us. Yes, प्रभु जी, please continue. So मैं सैन फ्रांसिस्को पब्लिक लाइब्रेरी को गया तो वहाँ सब फ्री में मेंबरशिप मिलता था. तो जहाँ वो इंग्लिश एडिटिंग के लिए किताब रखा हुआ था, वो सब इंग्लिश एडिटिंग किताब के बीच में एक छोटा पतली किताब था और वो साइड से मैं उनका टाइटल पढ़ा. वो टाइटल लिखा था क्वांटम मैकेनिक्स इल्यूशन ऑफ रियलिटी, इंग्लिश के एडिटिंग किताब सेक्शन में. तो ये कृष्णा का अरेंजमेंट सो वो पढ़ने से मैं सोचा ये क्या है क्वांटम मैकेनिक्स. देन सोचा ठीक है, इल्यूशन या रियलिटी टाइटल अगर होता है तो कुछ ना कुछ हमारा फिलॉसफी में जोड़ने के लिए कुछ होगा, तो मैं पढ़ूंगा करके वो किताब के लेके वापस मंदिर गया. तो वो किताब का लिखने वाला था एलिस्टर रे करके, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक फिजिसिस्ट, was a very qualified man. So he wrote a good book. It's not a popular science. It's popular, but it was accurate technically. तो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा समझ गया कि ये सबसे ज़रूरी यहाँ से भागवतम को कुछ कनेक्शन हो सकता है. उसके बाद मैं जाके वो दैट फील्ड में क्या क्या रिसर्च पेपर है वो सब थोड़ा ढूंढा पढ़ा.
पढ़ाई किया, तो उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में 35 साल 35 ईयर्स 35 साल के लिए आइंस्टाइन और नील्स बोर ने चर्चा किया, ये क्वांटम मैकेनिक्स में क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का है, इसके ऊपर 35 साल आइंस्टाइन ने चर्चा किया। और आइंस्टाइन ने उनका जीवन में थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए वो बहुत फेमस था। आइंस्टाइन E=mc² सबको मालूम है, और उससे एटॉमिक बॉम्ब भी आया था। बट लेकिन आइंस्टाइन ने बोला कि मेरा जीवन में इससे 100 टाइम मोर मैं क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम स्पेंड किया। तो क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए वो बहुत कोशिश किया, और उन्होंने सक्सेस नहीं हुआ उनका लाइफ में। Einstein did not succeed in solving that problem. But then I learnt this. So then I said, अगर आइंस्टाइन और नील्स बोर भी बहुत बड़ा नोबेल लॉरेट फिजिसिस्ट है, वो बोर का हाइड्रोजन एटम स्कूल में सब विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो वो अगर आइंस्टाइन और बोर कुछ चर्चा कर रहे हैं तो उसमें कुछ होना चाहिए। तो देन आई स्टडीड आइंस्टाइन एंड बोर ओरिजिनल पेपर्स। देन उसके बाद मैं PhD किया, आइंस्टाइन डिबेट क्या है आइंस्टाइन बोर, उसमें मैं एक नया रूप से दोनों का दृष्टि में लाया। इतना साल बहुत लोग उसको पढ़ रहे थे, फिर मेरा PhD में मैं एक नया रूप से एक कुछ दृष्टि लाया। सो उसके बाद my own interpretation also I have started developing. Oh, that is the point. So I became a quantum physicist afterwards in Bhaktivedanta Institute by Prabhupada's mercy. I feel this is completely Srila Prabhupada's plan to have someone like you to explore his dream. As we see, Prabhupada जी का सपना था कि वो चाहते थे हमेशा कि जितना भी हमारा रिलीजन है वो साइंटिफिकली प्रेजेंट किया जा सके। जैसे कि हमारी अभी कुछ ही समय पहले जैसे आपने अपना प्रभु जी का दर्शकों, प्रभु जी का एक YouTube पेज है जिसका नाम है रसराज दास, आप उस पे देख सकते हैं प्रभु जी की बहुत ही ब्यूटीफुल साइंटिफिक लेक्चर्स है। साथ ही में प्रभु जी की एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है www.rasaraja.org, and you can check out over there in that section in our acharyas what Srila Prabhupada says। बहुत ही ब्यूटीफुली प्रभु जी की वेबसाइट के ऊपर एक एक कोटेशंस दिए गए हैं, हाउ Srila Prabhupada wanted to have this scientific knowledge, the Bhagavatam, the scriptural knowledge to be presented, the Krishna consciousness to be presented in a scientific way. Prabhuji, would you like to read out some quotes from the website that you have of Srila Prabhupada? Go on. It's okay, Prabhu. I have some. I'll read it out for you from your website. In the Bhagavad Gita, Prabhupada ji ने इंट्रोडक्शन में लिखा है, the subject of Bhagavad Gita entails का मतलब है आवश्यक जानना चाहिए। So Bhagavad Gita entails the comprehension of 5 basic truths: Ishvara, God, the jivas, Atma, soul, and Prakriti, matter, Kala, time, and Karma, activity. So in these 5 topics, Prakriti or material nature is one topic, and Prabhupada says that all devotees, if you want to understand Bhagavad Gita, you must understand matter also. Now, the beautiful thing or important thing is that when you talk about God or Atma, you can have whatever view you want. Okay, scientists say that, we don't consider God within science, but we can say that we don't care for science, we consider God. So scientists may say we don't consider souls, and we can say that no, we consider souls. They may say we don't accept Bhagavatam, we say no, we accept Bhagavatam, we understand God, so we can say. But when it comes to matter,
You cannot say, we will say whatever we want, because they will say, we have done research और हम लोग 5 साल के ऊपर 500 साल के ऊपर शोध किए हैं और उससे वैज्ञानिक ज्ञान और टेक्नोलॉजी हम स्थापित किया है। अभी पूरा दुनिया में सब कुछ चल रहा है, ये सब साइंस के अनुसार चल रहा है। आपका सर्फ सोप, आपका ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, सेल फोन, कार, प्लेन, सब साइंस का दृष्टि है। एवरीथिंग, योर हाउस कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, एवरीथिंग इज मेड यूजिंग साइंस। सो मैटर के ऊपर हम ऐसा नहीं बोल सकता है कि कुछ भी साइंस कहने दो, लेकिन हमारा विश्वास भागवतम में है और भागवत में मैटर के ऊपर जो कुछ दिया हुआ है वो हम मानते हैं। साइंटिस्ट लोग बोलेंगे नहीं, अगर हमारे नज़र से भागवत का नज़र मैटर के ऊपर अलग है तो हम भागवत को परिष्कार करेंगे, क्योंकि साइंटिफिक रूप में हम मैटर को नॉलेज स्थापित किया। You follow the point? Yeah, completely. So God and soul, we can say anything as religious people, but as matter we cannot say. And Bhagavatam is saying things about matter. For example, Krishna says, Bhagavad Gita means, since 7th chapter, Bhumi rapo analo vayu kham mano buddhi revacha ahankara nitiyam me binna prakriti ashtata. So he's saying matter consisting of 8 elements. And that in the purport, Prabhupada expands the 8 elements to 24 elements. So it's Sankhya. Bhagavad Sankhya में 24 element है. But scientists बोलेंगे कि नहीं, हमारा periodic table से हम निर्माण किया है वो 120 elements, hydrogen, oxygen, like that, sodium. तो वो बोलेगा ये 24 element theory को हम नहीं मांगेंगे। तो आप क्या करेंगे? This is one thing. Another thing, Krishna says, Maya adhyakshena prakriti suyate characharam. Under my supervision, the world is running. But science, ये तो थोड़ा technical बात है, but scientists say that we have causal laws. Its causal laws actually do not require God's supervision. तो अपने आप इस दुनिया इस जो नियति हम साइंटिफिक लॉस किया है उसके ऊपर अपने आप मटेरियल वर्ल्ड चलता है। तो then this is again a contradiction. Krishna is saying under my supervision, they are saying no, under material law it's happening. So if you drop an apple, they say it is dropping according to Newton's law, not under God's supervision. So in this way, when it comes to matter, everything is, there are more very subtle contradictions also, the differences are there, right? So, for example, in Bhagavad Sankhya and in Bhagavad Gita also, Sita Ushna, Sita and Ushna are there, heat and cold, cold and heat, Sita and Ushna. But in science, there is no cold. Science, there's only heat. Okay. There's no heat. You don't say ice is cold. Ice also has heat. Yeah, if you keep something colder than ice there, then the heat will go from ice to the colder thing. Okay. So there is only heat flowing. There's nothing like cold flowing. But Bhagavatam and Bhagavad Gita are saying heat and cold. Sitoshna. So what is this? All this can be scientifically shown, established. Okay. We can show how even though science has scientific laws, still we can scientifically make it possible for God, Krishna's supervision. So all this, cannot be just like that done. इसके लिए एक नया रूप से विज्ञान को हम ला रहे हैं।
So we are bringing a new science. So only on the basis of that we can argue. That's a scientific topic. I don't want to say too many things about it. No, actually you can say, Prabhu, because I'm not a person who's from science background. School mein I have studied science, but the way you are explaining it, it is actually proper science, but in such a loosified language. इतनी साधारण भाषा में प्रभु जी आप इतने बड़े विज्ञान को समझा रहे हैं. I feel this is the best thing that the world needs today. आपकी बातों को आज के यूथ स्पेशली तक जो कि कहते हैं we don't believe in God, we don't believe in religion, it is all superficial, we only believe in science. So we need actually people like you who is actually working so beautifully in explaining the things so scientifically. And as you said, ये एक नया तरीका है साइंस को प्रस्तुत करने का. हमें एक नया विंग चाहिए पूरा साइंस का, जो कि हमारे शास्त्रों को एंड साइंटिफिकली प्रेजेंट करे. So Darshako, it is such a beautiful thing. Prabhuji is into quantum mechanics today. उन्होंने भक्ति में आने के बाद जब स्टडी की थी इस टॉपिक को, तब उन्होंने ऑटोमेटिकली इस पे रिसर्च करके अपना पीएचडी इसी फील्ड में किया है. सो प्रभु जी के शब्दों में उन्हें स्वयं श्रील प्रभुपाद से इंस्पिरेशन मिला है, गाइडेंस मिला है, विजन मिला है, according to which today Prabhuji is doing his beautiful seva. तो और दर्शकों, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था, अब हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. प्रभु जी आज के समय पे हेड करते हैं भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट मुंबई, जो कि जुहू में है, और बिट्स पिलानी के साथ में ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी कोर्स प्रेजेंट करते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं ऑन कॉन्शियसनेस स्टडीज. दे आर गिविंग द मास्टर्स एज वेल एज डॉक्टरेट्स इनटू इट. सो दर्शकों, अब प्रभु जी के साथ हम जानेंगे कैसे ये ब्यूटीफुल सी सेवा कर रहे हैं. और पुनः मैं इस बात को दोहराना चाहूंगी क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद का सपना था, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कई बार सोच सकते हैं हरे कृष्णा टीवी पे हम इतने सारे भक्तों की जीवन कथा सुनते हैं, वो अपने परिवार के संघर्ष बताते हैं, वो अपने संघर्ष बताते हैं, कैसे वो भक्ति में टिके हुए हैं, कैसे वो प्रचार कर रहे हैं. पर दर्शकों, हम ये बहुत ही डिफरेंट चीज आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड की नीड है. आज हम इंटरनेशनली इतना ग्रो कर रहे हैं साइंस को लेकर, तो आज आपके समक्ष ऐसे भक्त प्रस्तुत है जो कि साइंटिफिकली श्रीमद् भागवतम को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी एक इंस्टीट्यूट के तौर पे, जो श्रील प्रभुपाद का सपना था. तो इसी के साथ अब प्रभु जी, इट्स ऑल ऑन टू यू. You can tell us beautifully what kind of beautiful seva you're doing with Bhakti Vedanta Institute, fulfilling Srila Prabhupada's dream. There is another quote on my website. By the way, I have two websites. Okay. As a devotee, my website is www.rasaraja, rasaraja.org. But my scientific persona is also, I have a website, and that is www.Ravi Gomatam, RAVIGOMATAM.com, COM. Okay. So now I just wanted to also read one quote from Prabhupada. In 1977, Prabhupada जी से मिलने के लिए एक आदमी आया था. हाँ. उनका नाम है डॉक्टर शर्मा. और डॉक्टर शर्मा को वो साइंस में इंटरेस्ट था. ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज एजुकेटेड पर्सन. तो 1977 में अभी बॉम्बे मंदिर भी निर्माण पूरी तरह से नहीं हुआ था. हाँ. फिर भी प्रभुपाद जी ने, जब वो आया था बॉम्बे में, उनका सबसे पहला क्वेश्चन था, ये भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट कहाँ होगा. तो उस समय गिरिराज स्वामी और बाकी लोग बोल रहे हैं उनको अभी तक we have not decided. प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, बहुत जरूरी है, अभी जाके पता करो कहाँ है इंस्टीट्यूट होगा. तो then he went with Bhakti Swarup Damodar Swami, who was, was a PhD and also a disciple of Prabhupada, and he was the first director of the Bhakti Vedanta Institute. And they both went and came and said it will be on second floor. They will have 4 or 5 rooms. Prabhupada said 4 or 5 rooms, bas. And then next morning he said, चाहिए तो BA के लिए पूरा
बिल्डिंग दे सकता है और हम और दूसरा मंदिर बनेंगे। तो प्रभुपाद जी का विजन इतना बड़ा था साइंटिफिक प्रीचिंग के लिए। तो उस दिन वो शर्मा ने बोला प्रभुपाद जी को कि वो उन्होंने आया था और प्रभुपाद जी ने बोला उनको लेके भक्ति इंस्टीट्यूट कहाँ होगा दिखा क्या हो। सो दे वेंट एंड ब्रॉट हिम बैक एंड ही सेड बहुत अच्छा है आप एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हैं। सो मेरा फ्रेंड्स बहुत है फॉरेन में, उन लोगों को मैं बोलता हूँ कि अगर हमारा शास्त्र को आप अगर ठीक नजर से पढ़ेंगे तो उसमें साइंस ड्रॉप आउट कटिंग आउट। This many Indians say that no, if you study the Vedic literatures, you'll find everything, that is in science like that. Prabhupada said, no, he said, now I'm reading what Prabhupada said. Prabhupada said, no, he said, apart from Puranas and Vedic literatures, apart from Puranas, scientifically, it is a modern science. According to their way, we can convince. Puranas, you may not accept the authority. Puranas, you may not believe the authority. I may not believe. But scientific truth has to be accepted. So, Prabhupada is saying here that apart from Vedas and Puranas, according to science, I want you to present. इसका मतलब है, when we are talking about science, we should not bring Vedas and Puranas. This was Prabhupada's, instruction. So in my work, we have adhered to this very, very closely. And if you see my scientific papers, they are completely scientific. They are published in scientific journals. And it's about matter. So that is the most important thing, that independent of Vedas and Puranas, according to the scientific way. And what is the scientific way? Science studies only matter. So, Bina God, Bina Atma, Bina consciousness, Bina karma, Bina everything, you must study only matter and show God. This was Prabhupada's point. And it's possible, not easy, it's very possible. So everyone should understand that we are actually bringing a new concept of matter into science. Okay. That is from the Bhagavatam. Because quantum mechanics, जो न्यूटन से लेकर मैक्सवेल और आइंस्टाइन तक, they have some idea of matter. तो quantum mechanics ने ये स्थापित किया कि that idea of matter एक गलत है. इतना ही quantum mechanics बोल रहा है. But it is not saying what is the correct idea. Okay. So Bohr said that there is no other idea of matter possible. But Einstein said, no, there must be some idea of matter. We need a new theory. But he couldn't find the theory, Einstein. So it is that theory that I'm presenting now in science. What I call as a post-quantum theory, the next step after quantum theory, in which we are trying to develop a new concept of matter. Does that make sense? It makes complete sense, Prabhuji. It makes complete sense. It's actually such a beautiful thing. I would like to repeat this thing in Hindi for our audience which is here. दर्शकों, पुनः मैं एक बार ये बात कहना चाहूंगी जो प्रभु जी बता रहे हैं. एक शुरुआत में जो प्रभु जी ने बात कही थी कि जब प्रभु जी डेट्रॉइट में थे या फ्लोरिडा में, आई फॉरगॉट द प्लेस. डेट्रॉइट. सो तभी प्रभु जी एक लाइब्रेरी में जब गए थे तब उन्हें एक बुक मिली थी और वहां पर उस बुक में लिखा हुआ था अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें कि नील बोर एंड न्यूटन ने अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया. तो प्रभु जी ने उसको नील्स बोर एंड आइंस्टाइन. ओके, नील बोर एंड आइंस्टाइन की ये बुक थी जो कि प्रभु जी ने रीड की थी अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स. एंड प्रभु जी का तभी वो फील्ड ऑफ स्टडी था भी नहीं, बट प्रभु जी ने उसके ऊपर रिसर्च करके अपनी पीएचडी को किया और उन्होंने ये बात कह दी थी कि हम इससे परे कुछ चीज है पर उसके बारे में अभी जानते नहीं हैं.
सो प्रभु जी अपने वार्तालाप के थ्रू ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रभु जी ने अब इंटरनेशनली, प्रभु जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जो कि, ये हम आपको बता रहे हैं, प्रभु जी बड़ी विनम्रता से इस कंसेप्ट को साइंटिफिकली प्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रभु जी पहले व्यक्ति है जो कि पोस्ट क्वांटम थ्योरी को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो थ्योरी के बारे में नील बोर एंड आइंस्टाइन नहीं प्रस्तुत कर पाए थे, उसके आगे कुछ है उन्होंने कह दिया था, पर वो क्या चीज है वो नहीं कह पाए थे। तो उसके बारे में रिसर्च करते हुए प्रभु जी अपने पेपर्स, अपने रिसर्च आर्टिकल्स के थ्रू प्रस्तुत कर रहे हैं। और प्रभु जी बड़े सुंदर रूप से श्रील प्रभुपाद को कोट करते हुए बता रहे हैं कि जब भी आप साइंटिफिकली अपने शास्त्रों को या फिर धर्म रिलीजन को प्रस्तुत करिए तो वेदों और पुराणों को बीच में मत लाइए। सिर्फ श्रीमद् भागवतम के माध्यम से जो मैटर प्रकृति के बारे में बताया गया है उसको प्रस्तुत कीजिए। और प्रभु जी उसी के बारे में एग्जैक्टली बताते जा रहे हैं अपने रिसर्च आर्टिकल्स, अर्थात भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के माध्यम से। That's amazing, Prabhuji, and it's completely logical. We understand what a great work today Bhaktivedanta Institute is doing under you. Please let us know more about it, Prabhuji. Well, so just a second, Prabhuji, before we move ahead. दर्शकों, आप सभी से निवेदन है, प्लीज अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में पोस्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बस हम 10 से 15 मिनट के भीतर आपके प्रश्न भी लेना शुरू करेंगे। जहां तक मैं देख सकती हूँ प्रभु जी का जो कंट्रीब्यूशन है ये इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल है कि हम इस 45 मिनट्स में तो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, परंतु यदि प्रभु जी की इच्छा होगी तो हम पुनः एक शो लेना चाहेंगे इसके बारे में डिटेल्स में और जानने के लिए। पर दर्शकों, इसमें आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना बहुत जरूरी है। कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न पूछिए, आस्क योर क्वेश्चन एंड योर व्यूज, कि आपको ये कैसा महसूस हो रहा है ये सभी चीजों के बारे में जानते हुए। 10 मिनट में प्रभु जी आपसे बातचीत करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर करेंगे, इसीलिए अपने क्वेश्चंस को अभी से चैट बॉक्स में पोस्ट करना शुरू कर दीजिए। यस प्रभु जी, प्लीज गो अहेड। सो दूसरी तरफ से भी एक पॉइंट बता सकता है इसके ऊपर, क्या विज्ञान का इम्पोर्टेंस क्या है, और दो पॉइंट मैं दे दूंगा। विज्ञान क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने साइंस को थोड़ा क्रिटिसाइज किया मॉर्निंग वॉक्स में, साइंटिस्ट को, बट same Prabhupada is also saying, apart from Vedas and Puranas, according to science we can prove. So we must take both into account. So agar we want science, the influence of science is a must. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सब लोग को मटेरियल लाइफ में बेसिक नेसेसिटीज होना चाहिए। बिना बेसिक नेसेसिटीज कोई आध्यात्मिक लाइफ में प्रवेश नहीं कर सकता। इवन भक्त लोग बड़े मंदिर प्रभुपाद जी ने बहुत बड़े मंदिर बनाया और भक्त लोग को कंफर्टेबली स्टे करने के लिए और प्रसाद पाने के लिए सबके लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया, सुविधा किया। इसी प्रकार भगवान के ऊपर ज्ञान जो दे रहे हैं संत लोग, वो नॉर्मल वो तो पब्लिक को मटेरियल नेसेसिटी भी देना चाहिए। पहले इन द ओल्डन डेज द सेजेस वर कैपेबल ऑफ थ्रू mantras and yajnas and other things, they were able to give people what they want. Only then people were taking to spiritual life. If the world is suffering, people are not having money and food, then how they will be able to hear philosophy? So it is important. But now we have a science which is giving people needs physical well-being. So, anybody who wants to get a job has to study science or science-related something. Even economics, social sciences, psychology, medicine, it's all based on science. So, it is an important requirement that Adhyatmik log, they must also present the physical needs of people. You say that in Hindi.
Sorry, Prabhu. Once I again. said that, it is the duty of Adhyatmic leaders that they also give the physical needs of the people. And that Yeah. is now being done by science. सो प्रभु जी बड़ी ब्यूटीफुली इस बात को समझा रहे हैं कि साइंस हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जितने Physical. भी फिजिकल नीड्स, सॉरी, हमारे जितने भी नीड्स है फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। और यदि पुराने समय पे देखा जाए तो जितने हमारे साधु संत थे वो जनता की नीड्स को सेटिस्फाई करते थे, इसीलिए वो जो जनता थी वो अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ पाती थी। इसीलिए Correct. आज के जितने भी लीडर्स है, जो आध्यात्मिक लीडर्स है या फिर पॉलिटिकल लीडर्स है, उन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो जनता की नीड्स है उसे सेटिस्फाई करे। इज दैट राइट? Now important point is साइंस और टेक्नोलॉजी दुनिया लोगों का फिजिकल नीड सेटिस्फाई करता है, बट लेकिन ये साइंस और ये टेक्नोलॉजी थोड़ा नास्तिक है, इसलिए नास्तिकवाद बढ़ जाता है दुनिया में. So we have to bring in a science, material science that fulfills the physical needs of people and is also going theistic, not Gnostic, Astic. This is the point. So, but that physical needs is not just giving lectures. We must actually be able to have science and technology by which the whole world can exist and they can fulfill their material needs. But even above that, current science is known to be very destructive. Hamara Vatavaran, it is all the environment is, and global warming, energy, resources are depleting, genetic manipulation of foods, it can go to any place. So it is current science, although it's giving physical needs, it is also corrupting the planet. So it is all the Prabhupada therefore said, do something practical. Prabhupada said that. In science, you actually make the world a better place through science of matter that is based in Bhagavatam. That is not a simple thing. It is not a matter of just saying whatever we want. So many people in spiritual life, they are actually focusing on consciousness, how consciousness is not material, and they talk about God. But matter, they have left it to scientists. But we are taking from Astivase, we are taking matter and then going to soul and then God. I don't know whether I'm making sense, but yes. That is where Bhakti Vedanta Institute and the research that we are doing is unique. दर्शकों, प्रभु जी बता रहे हैं कि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि चेतना के बारे में बात करते हुए भगवान की बारे में प्रस्तुति करते हैं, पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मैटर, हिंदी में हम उसे पृथ्वी कहते हैं, प्रकृति प्रकृति, matter. सॉरी, प्रकृति। सो प्रकृति के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करता है और प्रकृति के माध्यम से अर्थात मैटर के बारे में कोई भी चर्चा करके भगवान के बारे में प्रस्तुति नहीं करता है। परंतु जो प्रभु जी अपना रिसर्च कर रहे हैं भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के माध्यम से, हम यहाँ पर यही कार्य कर रहे हैं, वो है मैटर को श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, प्रकृति को श्रीमद् भागवतम के माध्यम से भगवान की तरफ प्रस्तुति करना, अर्थात चेतना के बारे में, धर्म के बारे में, इसके बारे में बहुत ही साइंटिफिकली प्रेजेंट करना, जहां पर वेदांत या फिर वेद और पुराण नहीं बीच में आ रहे हैं। और so that's very important thing is that जब प्रकृति के बारे में अगर आप साइंटिफिक से विज्ञान रूप से कुछ प्रस्तुत करेंगे तो साइंटिस्ट लोग भी उसको मांगेंगे, they accept. So that is the importance of saying, आपने पहले बताया कि जो मेरा research papers है, that is are being taught in American universities, means they accept. So if you go to my website, you'll also see scholarly appreciations. One Nobel Prize winner has said that we must be doing science like this on my work. So they accept. That's what Prabhupada said, that according to modern science, if you present, they will accept. Now there is a third point about the importance of science. विज्ञान का importance क्या है, और तीसरा point लाऊंगा. तीसरा point है वो हमारा आचार्य लोग
श्री जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी ने कहा दिया है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा अनावृत्ति स्यात् लगता है। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा मीन्स some degree of faith in things that are not seen. जब आपको डायरेक्ट दिखाई देता है उसमें विश्वास रखने का बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, बट अगर हमारा डायरेक्टली वी आर नॉट परसीविंग समथिंग, उसमें कैसे विश्वास रखेंगे? इसलिए लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है, राइट? भगवान को दिखाओ, because that is they don't have shraddha. But they don't say, you know, इलेक्ट्रॉन को दिखाओ, इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकता, बट इलेक्ट्रॉन से effect of electrons when they're flowing are current, and the current is doing so many things. You switch on the light switch, light is coming. So people, when scientists say that the light is coming because of electron, they accept. So science has actually given people shraddha. That is, if people are pious, like most of the devotees, we all actually read the Bhagavatam, we accept there is spiritual world. Why? Because पिछले जन्म में जो लोग पुण्य किए हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में जाके यहाँ फिर से दुनिया में पैदा जन्म मनुष्य जन्म लिया, तो उनको याद है, because they know that we have seen. So because of that they can believe something more. Like you have not seen a rocket, आप कभी रॉकेट को देखा नहीं, राइट? लेकिन आप साइकिल को देखा है, कार को देखा है, प्लेन को भी देखा है, तो इसलिए आप विश्वास रख सकता है इसके ऊपर एक रॉकेट भी हो सकता है, because you have seen. Like that, because pious punya log, because they have experience of Swarga and all that, they can also believe in Vaikunta and Goloka. Thoda extra. Like plane ko dekha hai, so we can believe in rocket. Otherwise, nobody has seen a rocket. Now, but people who are not pious, puppies, they go to hellish planets. So when they come, they don't want to remember that. Why they should? Those who have gone to hellish, heavenly planets, they can remember, but those who go to hellish planets, they may not remember. So such people, when they come on the human birth, they don't have Shraddha, because they don't believe, they don't want to believe anything beyond what they see. But science has given them belief in atoms, electrons, genes, you see. And so, because out of those things that they cannot see, they have produced things you can see. You have air conditioner, you have heater, you have got car, you have got plane. So, science can also give Shraddha for people who don't have Shraddha. So, if you are bringing something through matter, then they will also believe in things beyond matter if this science is accepted. Is this point clear? Completely clear, Prabhuji. बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है प्रभुजी ये. ये सब लॉर्ड चैतन्य का प्लान है, हमारा नहीं है, मेरा प्लान नहीं है. Lord Chaitanya is bringing this new knowledge which has never come in Vaishnava life. I want to say a lot of things, but I'll say one more point. Yes. So Lord Chaitanya is bringing, first when he came, he presented Krishna. Sab Krishna Leela Prabhu. But he also said everything else, but he emphasized Krishna. When Prabhupada ji came, he also presented the whole philosophy, but he emphasized Atma. Hum Sharir nahi hai, hum Atma hai. In the next stage, Lord Chaitanya is bringing matter. And Prabhupada, I read from the introduction, Prabhupada said, matter ko janna jaruri hai. If you want to understand Bhagavad Gita, not only you must understand
God and soul, but he must also understand matter. Matter. Just like I give an example, एक उदाहरण है कि अगर आपके पास एक मैप है, आप मैप में दिल्ली कहाँ, दिल्ली जाना चाहता हूँ आप बोलते हो, सो किसी ने आपको बताया दिल्ली यहाँ है मैप में, तो उसका मतलब नहीं है कि अभी आप दिल्ली जा सकता है, लेकिन आप पहले आप जानना चाहिए आप ये मैप में कहाँ है. वो बॉम्बे में है तो बॉम्बे से दिल्ली ऐसा जाने का, अगर वो ओडिशा में है तो ओडिशा से दिल्ली ऐसा जाने का. सो कहाँ जाने का भी मालूम होना चाहिए और हम कहाँ हैं वो भी मालूम होना चाहिए. सो सब आध्यात्मिक लोग को मालूम है हम वैकुंठा पहुंच जाने का, गोलोक को जाने का, लेकिन हम ये कहाँ है मटेरियल दुनिया में ना वो भी जानना चाहिए. तो भगवद गीता में दिया है कि नासते विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टंतो. उभयोरपि दोनों, मैटर इज शाश्वत, स्पिरिट और चित्त शाश्वत. ये दोनों स्टडी करके ही ऋषि लोग ने कंक्लूजन को आया. सो यू कैन नॉट ओनली, सो आध्यात्मिक आदमी लोग सिर्फ कॉन्शियसनेस को मांगते हैं, तो मैटर को परिष्कार करते हैं, और साइंटिस्ट लोग मैटर को मांगते हैं, चित्त कॉन्शियसनेस को परिष्कार करते हैं. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने दोनों ला रहे हैं. दिस इज द इम्पोर्टेंस व्हाई साइंस इज मटेरियल साइंस इज इम्पोर्टेंट. This is amazing, Prabhuji. Matlab, the way you are presenting such beautiful philosophy, and the two concepts, consciousness and matter, चेतना और प्रकृति, ये जो दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है, इनके बारे में आप मॉडर्न साइंस के माध्यम से, आज के मटेरियल साइंस के माध्यम से जो प्रस्तुति कर रहे हैं, ये हमारे जो आज का जनरेशन है, जो जैसे आपने कहा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये नास्तिक है, और इसमें बिलीव करने वाले लोग भी ऐसे हैं जो कि आपने बहुत सुंदर उसका भी प्रस्तुति किया, क्योंकि पिछले जन्म में कभी उन्होंने देखा ही नहीं है कि स्वर्ग है या फिर ऐसी चीजें, इसलिए वो बिलीव ही नहीं कर सकते हैं. पर हाँ, जिनका आस्तिक है, जिन्होंने देखा है, उनको विश्वास है कि हाँ ये चीज है. बट ऐसे नास्तिक लोग भी इस मैटर एंड कॉन्शियसनेस थ्योरी या फिर मटेरियल साइंस में इस कॉन्शियसनेस अंडरस्टैंडिंग, मैटर के अंडरस्टैंडिंग्स के माध्यम से इसको एक्सेप्ट करेंगे. जो हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है, अगर साइंस के रूप से आ रहा है तो इवन नास्तिक लोग मानेंगे. ये पॉइंट है. ब्यूटीफुल. इट्स अ वेरी बिग फील्ड. आई एम जस्ट टेकिंग थोड़ा पॉइंट लेके बोल रहा हूँ बस. लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर टू बी सेड, and I have not actually gotten into science. Okay. But that's okay. So this is general interview, so we are not getting into science. That's beautiful, Prabhuji. Matlab, though you are not getting into the complete science, but the way you have presented that philosophy for the general audience, हमारी आम दर्शक जो है वो भी इस beautiful understanding को वैज्ञानिक रूप से समझ पा रहे हैं कि कैसे विज्ञान और साइंस, विज्ञान और रिलीजन को, यानी कि साइंस एंड रिलीजन को हम एक समन्वय, एक कोलैबोरेशन में लेकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Thank you very much, Prabhuji. I think we are towards the time wherein we have lots of questions with us. So okay, I am seeing there are lots of questions with regards to science, and being you, Prabhuji, we are very happy to have such kind of intelligent questions with us. So with your permission, Prabhuji, we would like to get into the question answer section. Sure. So, Darshako, it's your turn now. And the first question is coming to us from Mr. Natarajan. He's asking, what is post-quantum physics? उनका बैकग्राउंड क्या है आप बताइए पहले. नटराजन जी, आपका बैकग्राउंड क्या है? आप चैट बॉक्स में जरा पोस्ट करके बताइए. Are you from science field, or what is your specification, specialization? Yeah. Till Because then, accordingly I can answer. Otherwise, Yeah. Till then, we'll continue with the next question, Prabhuji. We'll come back when he answers. We can have the next question, please.
And the next question is from Raghav. Raghav Dodia. Hare Krishna Prabhuji. People say that we should use everything in Lord's service. I wanted to know the exact purpose of studying quantum mechanics and doing this. It's a very good question. So, we also have the Acharya saying, Prapanchikataya buddhya harisambandhi vastuna mumukshubhir parityago falgu vairagyam kathite. So, when we think that something is material and we give it up without knowing its connection to Krishna, then such a renunciation is considered incomplete. Falgu Vairagya, it's called. So everything is connected to Krishna, but we have to know how. Vasudevam sarvam iti Mahatma Sudurlabhaha. Maya tatamidam sarvam jagat avyakta murtina. So Krishna is repeatedly saying, I'm in everything. So matter, Krishna is saying, separated Shakti. Bhumi rapo analo vayu kam mano buddhi revacha ahankar. Binna prakriti. Binna prakriti means separated. तो कृष्णा ने उनका शक्ति को सेपरेट अलग करके वो जो मटेरियल दुनिया में है सब आत्मा को दिया, ठीक है, आपके लिए है. So in that sense it is separate, but it is connected to Krishna. Just like I give the example, if I'm speaking, ये मेरा आवाज है, डायरेक्टली मेरे से ये मेरा आवाज आ रही है. अगर मेरा आवाज को कोई किसी ने रिकॉर्ड किया और वो रिकॉर्डिंग को आपने प्ले किया और कोई पूछ सकता है ये कौन, ये किसका आवाज है, आप बोलेंगे ये रसराज दास का आवाज है, लेकिन ये मेरा सेपरेटेड वॉइस है जो रिकॉर्डिंग हुआ है. जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा डायरेक्ट वॉइस है और मैं दोनों से ऊपर है. तो मेरा वॉइस और रिकॉर्डेड वॉइस दोनों से मैं अलग और मैं ऊपर. तो इसी प्रकार कृष्णा का अंतरंग शक्ति है वो चित शक्ति और मैटर इज बहिरंग शक्ति एक्सटर्नल, और कृष्णा इन दोनों से तो ऊपर है. So just like even though my voice is recorded, it is separate from me, still it's my voice. Like that, even though matter is separated, Binna Prakriti, still it is Krishna's energy. So by studying matter also, we can use it for Krishna's purpose. That is it. How to use it is not so simple. Everybody cannot. So, जो प्रकृति से बना हुआ वस्तु है वो सब हमको मालूम है कैसे कृष्णा के लिए यूज करना है. पानी है तो भगवान को पानी पिलाएंगे, फल फ्रूट है तो फ्रूट भगवान को खिलाएंगे, फल है तो कृष्णा को फूल दे देंगे. That is all simple. How to use material object को, वस्तु को कैसे कृष्णा के सर्विस में जोड़ने. But matter को कैसे जोड़ना है, that is science. That is why are we doing, that is next time if you interview me, then I'll tell you what is the importance of this. Because Prabhupada जी ने लिखा है एक लेटर में, जो लोग मंदिर को नहीं आएंगे उन लोगों के लिए ये साइंस है. तो कितना लोग मंदिर में नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा मंदिर में नहीं आते हैं ना. पूरा दुनिया में पॉपुलेशन लेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग ISKCON टेम्पल में नहीं आ रहे हैं, नहीं आते. उनको रीच करने के लिए प्रभुपाद जी ने इसको स्थापित. So you can imagine the reach of this scientific work is far greater than temple work, because it will bring all the people who don't accept Krishna to accept Krishna. But it's a very deep subject matter. How we are doing, I have to explain. It's not so simple. So material वस्तु है, उसको वो कैसे कृष्णा के सर्विस में लगाएंगे, that is one एक नजर.
Matter itself, how you are going to connect to Krishna, that is second. So, जो वस्तु है वो उसको कैसे कृष्णा के सर्विस में लगाएंगे, that is common sense. Matter को कैसे कृष्णा का सर्विस में लगाएंगे, that is science. That's not so simple. Did I answer the question? Yes, Prabhuji, completely. Thank you so much, Prabhuji. I can see there are lots of questions, Prabhuji. Let's start with the next question now. And the next question is Kushagra Kumar, who's asking the question: is the space-time continuum and Maya the same? Hare Krishna. Space-time continuum and Maya. No, not the same. Space-time continuum is an idea in physics. I'll give you a simple example. Scientific theories are like colored glass. अगर एक ग्रीन ग्लास से दुनिया को देखेंगे तो दुनिया ग्रीन दिखाई देगा. अगर एक रेड ग्लास लेकर अगर दुनिया को हम देखेंगे तो दुनिया रेड दिखाई देगा. इसी प्रकार हर एक साइंस में मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन है, थियरी. सो वो अलग अलग रंग ग्लास का समान है थियरी. सो न्यूटन के थियरी से आप देखेंगे तो एप्पल इज फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी. ऐसा नहीं है ग्रेविटी वास्तविक नहीं. दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ अंडर डिटर्मिनेशन. Scientists know this, and I'm not going into that. So when you see it through Einstein's theory, the world is having space-time. So space-time is a mathematical idea. It's a four-dimensional manifold. And that space-time is curved. So in Newton's physics, Apple is falling because of attraction by Bhumi. But in Einstein's thing, the space-time, because the Earth is very big, is curved. And because it is curved, the apple is falling. So the explanation is completely different in Newton's physics and Einstein's physics. So devotees don't understand this point, that scientists are not explaining the world. No. Science can never explain the world. People don't understand this. This is why even बड़ा नास्तिक साइंटिस्ट था ना, उनका नाम क्या है? स्टीफन हॉकिंग. आप सुना होंगे ना? Yes, yes. Stephen Hawking was a big atheist. But even he said physics is only about meter readings. मतलब ऑब्जर्वेशंस को प्रेडिक्ट करने के लिए साइंटिस्ट लोग मैथमेटिकल थियरी को यूज करते हैं. वो थियरी और वास्तविक रियलिटी के लिए कनेक्शन कुछ नहीं है. दिस इज नोन एज एंटी रियलिज्म. So science cannot actually describe reality, but it can come up with a picture of reality by which you can get practical use. This is it. Whereas Bhagavatam is about describing reality. So as such, science or Bhagavatam connection, we must properly understand. So the question, space-time continuum, is not Maya, because Maya is something else. Space-time continuum is a concept physics has used in Einstein's theory to understand something. Anyway, we can go to the next question. Okay, Prabhuji. Thank you very much. Let's move on to the next question, and this is being asked to us by Pranav Has Kumar. Natarajan answered his background? Sorry? Natarajan, the first person who asked the question. Let me check once again. Doesn't matter. You go on with the next question. He hasn't posted Prabhuji yet. So the next question is asked to us by Pranav Kumar. He is asking, the commentaries on Brahma Sutra of Vadrayan have been written by Adwait, Advaita and Vishishtadvaita scholars. Advaita scholars like Shankaracharya and Shivananda do not criticize Vishitadvaita. Can do both? Can? What is that? Advaita scholars like Shankaracharya and Shivananda
Do not They do not criticize Vishishtadvaita, then can? do both. I see. I think what he's asking is that Shankaracharya did not criticize Vishishtadvaita, but Vishishtadvaita people are criticizing Shankaracharya. Vaishnavas generally criticize Shankaracharya. So you can make the question more general. Advaitis don't criticize Vaishnavas. Why should Vaishnavas criticize Shankaracharya? I think this is the question. Okay. Probably, Prabhuji. Even I didn't get it. And it is not directly connected to my discussions about science. Yeah. So I don't, but still we can answer that by saying that Vaishnava scholars, especially Lord Chaitanya, when following Lord Chaitanya, we don't criticize just simply Advaita philosophy, but we say Advaita philosophy is a small part of the truth. So we criticize Advaitis only for saying their philosophy is a complete truth. That we say is not correct. That's all. Just like I just give an example many times. I mean, it's not connected to my science, but still I will say that. I've given the example that if somebody says, he is a man, he is a man, and let's say there are two men, and that is correct. But if somebody says, this is a man, that's a man, but this person is a citizen, that person is a prime minister. Oh, I didn't know that. Otherwise, I thought they were both equal. And then somebody comes and says, yes, this is a man, that's a man, this is a citizen, that's a prime minister, but his name is something, say Modi. Oh, Modi means then he has got some more knowledge, information is coming. Then somebody comes and says, okay, you're a man, he's a man, and your citizen is prime minister, and he's Modi, and you are his son, or you are his friend. So then the relationship is given. So like that, there are many, all philosophies, they bring you differently to God. So Advaita philosophy, Shankaracharya said, you are Brahman and God is Brahman. Sarvam Kalavidam Brahmam. So it's like saying everybody is human being. So people thought that me and God are equal. That's wrong. So Ramanujacharya came and said, no, your Brahman is Brahman, but he is Para Brahman. You are Sada Brahman. Like he is your citizen, he is Prime Minister. And Madhvacharya came and said, your Brahman is Brahman, your Sada Brahman is Para Brahman, plus he is Krishna. And Lord Chaitanya came and said, your Brahman is Brahman, and your ordinary Brahman is Para Brahman, and is Krishna, and you have a relationship, rasa, dasya rasa, santa rasa, vasalya rasa, sakya rasa, madhurya rasa. So Lord Chaitanya gave everything. So we don't criticize Advaita philosophy as wrong, per se, but when you try to think that is the complete philosophy and make conclusion, that's wrong. It is not correct to say, it's not incorrect to say your man is man. Modi is also a man, somebody else is also a man. But it is wrong to conclude therefore both equal. So that's all, I don't know whether I answered the question, but that's... Yes, Prabhuji, you did completely. The next question that we have is by Shashi Kiran here. Hare Krishna Prabhuji, as per Prabhupada's instruction, are you trying to establish relationship between science and consciousness? We are trying to establish a relationship between science and matter first. Yes. Because science, there are two views of science. One is called realism, another is called anti-realism. You can Google this and later study. These are deep subject matters. So there is two schools of thought. Realists believe that science gives a description of matter, right? And that cannot be proved. Very important, because most people when they study in school, they think they are studying about matter. Yeah. No, science is not describing matter.
This is a very difficult point. Science is actually constructing some theories which allow us to make predictions. That's all. So the view that science only predicts and does not describe, that is matter, is called anti-realism. Today, anti-realism is the only justified thesis. Realism has not been justified. So I am bringing in a new idea called tandem realism. And see, here is an example. So we are not bringing in Vedas and Puranas. We are in science, we are saying you have realism, you have anti-realism, and I have tandem realism. And this actually allows you to understand matter within science, which you cannot in science. So let me repeat this. It's now बहुत जरूरी point है कि science और matter प्रकृति no direct connection है. There's no direct connection नहीं है. वो direct connection हम ला रहे हैं science में. So first science and matter, later science and consciousness. Thank you, Prabhuji. That's very beautiful. May I make one more point here? Very Yes, important. please, Prabhuji. If you don't know matter, this is a very important point. अगर आपको प्रकृति क्या है नहीं मालूम पड़ता है, आप consciousness और चित्त शक्ति भी नहीं, आपको नहीं मालूम होगा. क्योंकि अभी आप जो सभी लोग जो अभी सोच रहे हैं कि हम conscious हैं, right? अभी I'm awake, so I'm seeing things, I'm conscious. But actually, that is not consciousness. Whatever you're feeling now, that's matter. That is why mind has got thinking, willing, and feeling. Mind is there, matter. Senses are there, matter. Then gross prakriti is there, that's also matter. So all this we have misunderstood to be consciousness. So when devotees say consciousness is not matter, they don't even know what is matter. So they also don't know what is consciousness. Whereas when Prabhupada says consciousness is not matter, he knows consciousness and he knows matter, both. Yes. Dono ubayorapi drishtanto, he can say. So we know neither. And there is another very beautiful quote of Prabhupada where he says that, when you chant, this is a very important, you'll come to know matter first. I'll read that. Can you imagine that? Prabhupada is saying, by chanting and saying, you can know Krishna, but knowledge begins not from Krishna, but from matter. Can you believe that? Prabhupada has written that in Krishna Consciousness, Topmost Yogas. So these are all there. People we do not know. So Prabhupada is saying that you have to understand matter. There is some network glitch. I feel this point by Srila Prabhupada is already heard by us, but today when Prabhuji is speaking it, we understand it actually what it means. So yes, Prabhuji is there with us. Yes, Prabhuji. Okay, next question, please. Okay, so the next question here we have is from Preeti. She's asking, Preeti Bhatnagar is asking, Hare Krishna Prabhuji Dandavat Pranam. These days I am also studying Bhakti Shastri Course. How may I proceed after course to connect scientifically and spirituality in combination? No. You cannot connect to science unless you're a scientist, and even then, unless you are a scientist from Bhagavatam. Simply, there are many millions of scientists in the world. But you have to be a scientist who connects Bhagavatam to science. That is matter. So that's very difficult project. Next question. Next question is from Manisha. She is asking, Prabhuji, Srila Prabhupada said that this Hare Krishna movement will go on for 10,000 years. Do you think this new science will play an important role? It will play an important and essential role for the next 10,000 years, because it will change the way we think about the world, and therefore it will also change the way we think about consciousness and God. Okay, Prabhuji. The next question is from
There's a comment who's saying, "Thank you for revealing to us the tip of what is wonderful new science." Another question that comes over here is from Prasad Tambre. He's asking, Mhm. quantum post quantum means Prabhuji are trying to prove presence of God. Hare Krishna. No. Post quantum means the theory after quantum mechanics. Just like Einstein, Newton is there, afterwards Maxwell's theory, afterwards Einstein's theory, afterwards quantum mechanics, afterwards post quantum. So post quantum is a theory in science, physics, after quantum mechanics. Okay. The next question is from Ram Kumar. He's asking, Prabhuji Namaskar, do your institute conduct courses through online which explain divine knowledge through matter by substantiating with scientific laws? This is a good question. It's a very good question, and the answer is yes. Actually, what I have done is, although for 44 years I have worked only within science, now I have recently started, because you see, you cannot popularize science without first establishing things in science. So I'm now presenting uh, this connection between Bhagavatam and modern science for general public. So on my YouTube, I have YouTube shorts, 2-minute videos, and people can go to this Rasaraja Dasa, Rasaraja Dasa, Dasa, and if they type, they will see two channels, but one of them is mine, which will have my picture, and you can subscribe there, and you can see also those videos, 2-minute videos on various aspects of science and general life. But I'm also going to start an online course on modern science and Bhagavad Gita, in which I will explain. Like you said, this question is phrased nicely. Can you please reread the question? It is, Are you? now, do your institute conduct courses through online which Mm-hmm. explains divine knowledge through matter by substantiating with scientific laws? Yes. So I think this point, you please send me the question. I'd like to keep the phrasing. Divine knowledge Yes, through Prabhuji. matter, substantiating using science. That's exactly what this course will be, modern science. And it's for everybody who may not know any science, who may not know any Bhagavad Gita. It will be very simple. So if you go to my website, you can also pre-register for that course. Okay, Prabhuji. Thank you very much. Mm. Jyoti Dwivedi is asking a question. What to answer, Prabhuji, when someone says that how Sri Ram and brothers can be born by sweet rice as a scientific explanation? Come again, who is born by sweet rice? Lord Rama and his brothers, Ah, they were. yes. Yes. So, how do we explain this scientifically to people when they ask this question? This is what I said before, that in the olden days, sages were so powerful that they were able to fulfill the desires of people. And when Dasarath and his 4 wives, they did not have progeny, children. In the modern times, they will have, scientists will give them IVF, in vitro fertilization, surrogate motherhood, and like that they make things possible. In the olden days, sages actually made it possible. They actually gave, you know. So this see, before we can explain this science, we have to first establish, understand first of all what is matter. But still, I'll give a little thing. But Prabhupada explains that whenever we eat food, the food actually becomes energy, and that energy um, then later becomes in a male body, it becomes the male fluid, and when that fluid is retained, it becomes ojas, and when that ojas is absorbed by the uh, bones, it becomes tejas. So we go from food to energy to paurusha and male fluid to the so
when you eat the food, then of course the modern science knows that in the male fluid there are sperms, unlimited sperms. And when it's impregnated in a woman, one of the sperms actually joins with the egg and then fertilization occurs. It's all known in modern science. So the main point is that the sperms are there in the seminal fluid. How? Because that is coming from food. So even ordinary conception takes place when Prabhupada explains that souls are coming through rainfall and they fall into the ground and they are grown into the food, and when you eat the food, then through that the soul is entering. So food is the way soul enters the body. Here the sage is directly giving the food, which is, through which, conception takes place. And of course, in the case of Krishna, Radharama, it's divine conception. But these are not things that can be scientifically explained right now until we change the way scientists are understanding matter. That's a very big topic, but I just said something. Okay, Prabhuji, thank you very much. SK Haridas has the next question for us. He's asking, wisdom take away from God. Faith has no concern with education. Sorry. The next question is by Ankita. Hare Krishna Prabhuji, is it possible to explain the 8 siddhis with respect to matter or science? Is it possible to explain? 8 siddhis, 8 siddhi. No, siddhis are some form of the siddhi is there. It's all, the 8 siddhis are anima, mahima, 8 सिद्धि है, और एक सिद्धि है अनिमा. अनिमा का मतलब है सबसे बहुत लघु होने से अनिमा. So you can see plane is also going. It has become very light and it's flying. Otherwise, if any object in the sky will fall down, but it's very light, it's going. So you can say like that, but actually the Ashtama siddhis, they are coming from to sages by tapasya. And that is also, there are mantra vidya. And current science is yantra vidya, machines. They also have similar things, but the method is completely different. And we are introducing a science that is between mantra and yantra. Yeah, so I'll have to go into a lot of science to explain what the new one is. But right now we have yantra vidya. And in the olden days, they had mantra vidya, and now mantra vidya is not possible. But yantra vidya is not good. So Lord Chaitanya is bringing the next level above yantra and one level below mantra. When all of this, the 8 siddhis in various ways will be present in all these sciences. Okay. Yeah, and yantra vidya may be here. That is what I said. And for example, you see, you have you see people are working on the road, and they got just a rod, but when they press, it is drilling the holes. It has become so heavy. The rod itself is very light, but through electricity, they got a machine in which it has become so heavy that it can make a hole on earth. If we stand on earth, we don't make a hole. But that is the drill is making a hole. So that is Mahima Siddhi. But it's of a different kind. So sages had Anima Mahima, that's of a different kind. And the new science we are bringing also will have nice science and technology. It will also have the 8 siddhis, but of a different kind. Thank you, Prabhuji. It's all coming. It's all coming. However difficult it may be to believe it's coming. Yeah. The next question is from Ravi Ravindran. He's saying 99% of the world is Nastic and believe in science matter. So serving in this area will definitely please
And there are greater chances of going to back to Godhead, Prabhuji. What is the last point about back to Godhead? He's saying that so serving in this area will definitely please Mahaprabhu. He has written MP, so I believe this is Mahaprabhu, and greater chances there, and there are greater chances of going to back to Yes. Godhead, Prabhuji. Yes. Yes, that's a good point. Thank you, Prabhuji. Connecting to the next question here. Why Yes. is it said that the matter is made of concentrated light? Why is it said that matter is made of concentrated light? I don't know who says that. Then in science, I don't think we would put it like that. I don't know. Because light, according to at least modern physics, is photons, according to quantum mechanics, and they are massless particles. So, matter is condensed light. That's not the standard way of putting. Yeah. Next question. Next question is by Balu, who is saying, Mataji, please ask my question that on theory of relativity, it says that when speed of particle is equal to the speed of light, then the time becomes constant. It's the same case with Vaikunta, isn't it? All right. So, first of all, in theory of relativity, the speed can approach light only asymptotically. That means it will get closer and closer to speed of light. It will never be speed of light exactly. So, speed of light is considered, is taken in the theory to be the limit. So, all other objects can approach the speed of light, but they cannot actually, and it's We have some connectivity issue. Prabhuji will be there with us soon. I request all of us to be there. आप देख सकते हैं दर्शकों कितनी सुंदर से प्रभुजी ने अपने इतने ब्यूटीफुल साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से हमें प्रभुपाद के सपने को पूरा होते हुए दिखा रहे हैं। और जो प्रभु जी ने पॉइंट कहा कि मंदिरों में, श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी जो लोग मंदिरों में नहीं आ सकते हैं उनके लिए साइंस या विज्ञान के माध्यम से ये सुंदर सा ज्ञान प्रदान किया जा सके। और इसीलिए और जैसे कि प्रभु जी ने कहा, विश्व में ऐसे कितने ही कम लोग हैं जो कि मंदिर आते हैं और अधिकतर जनता जो है वो मंदिर नहीं आती है, तो उनके लिए ये साइंटिफिक रिसर्च होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए प्रभु जी जो साइंटिफिकली रिसर्च करके भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के माध्यम से ये सुंदर सी चर्चा को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक सराहनीय बात है कि जहां पर लोग कहते हैं धर्म में विज्ञान नहीं हो सकता है, हमारे पास भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट है, हिज ग्रेस रसराज प्रभु जी है, जो बहुत ही सुंदर रूप से इंटरनेशनल लेवल पे इस विज्ञान को प्रस्तुत कर। यस, प्रभु जी इज देयर विद अस। Yes. So I was saying that she was trying to connect some idea in science to some idea in Brahma Samhita or Bhagavatam. We should not do that because science is studying just matter. And it's also studying matter in a small way. It's not studying all matter and material world. So, this, direct connection, if you want to connect Bhagavatam to modern science, it should be about matter, because science is studying matter. And only when you bring in a new concept of matter, can you bring, that is from Bhagavatam, can you bring other ideas from Bhagavatam inside science. Okay. Otherwise, scientists will make fun of it. I remember meeting the head of a very important, what you can call as a movement or party or entity. And
It's nationally important society. And the head of that person I met, and they introduced me saying he's a scientist and is also a monk. And that person said, I'm so happy that you are showing that whatever is in modern science is in the Vedas. I said, no, I'm not showing that. Then he said, so what are you showing? I said, I am showing that what is not yet in modern science is in Vedas. Because if something is in Vedas is in science, then scientists have already found it. They'll say, we don't need your Vedas. But what is not in science is in the Vedas, and we are bringing that to improve science like that. Anyway, next question. I think so. We are done, Prabhuji, for the day. Oh, okay. Thank you very much, Prabhuji, for being with us today. And I'm very, very happy to have such a beautiful, amazing experience being shared by you, Prabhuji. हम आपको हरे कृष्ण टीवी के बिहाफ पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं एक छोटा सा उपहार देते हुए. So Saral Home and Hare Krishna TV is presenting this small Shri Radhe cushion for you, Prabhuji. Thank And you. we would like to thank you from the bottom of our hearts for we can't thank you also for the great work you are doing, Prabhuji. It's beyond words of expression. But the work itself is so beautiful that I can only request you to come back again for one more show with us. That is what we can request you. I'll be So most happy. we would like, you can decide a topic, Prabhuji, that day, because we are done with your journey and we are very happy, so we can have a special a topic that you would like to decide, and we can have a show with you, Prabhuji. So Thank you before so we leave, Prabhuji, we would like to request you to say some few last two words so that we can conclude the show. Well, Sri Chaitanya Mahaprabhu is the most munificent incarnation, Karuna Avatar, and Srila Prabhupada is his most merciful representative. So we are trying to follow the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada. All the devotees are preaching in different ways. I'm also doing a small bit. And if you are, in any way that you can participate in the scientific program also, will be very pleasing to Prabhupada. Thank you. Thank you very much, Prabhuji. We are hoping to have another session with you soon so that our audience and the world can be blessed to know how Srimad Bhagavatam is being presented by you in a more scientific language, Prabhuji. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna. तो दर्शकों, इसी के साथ आज की यह संध्या तो समाप्त होती है. ऐसी कई सारी शाम आपने बिताई जरूर होगी एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ, पर ऐसी संध्या आज तक कभी नहीं बिताई होगी जहां पर आप इतनी सुंदर रूप से विज्ञान को समझ रहे हैं, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैटर एंड रिलीजन विद रिगार्ड्स टू श्रीमद् भागवतम. इसीलिए आप सभी से निवेदन है, प्लीज सभी के साथ में आज के शो का लिंक शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हरे कृष्ण टीवी के साथ में, क्योंकि ऐसी अनेकों भक्तों की कहानी हम आपके साथ में शेयर करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का.